As you get older, life becomes all about following a few simple rules. Be a gentleman. Work hard. Mind your manners. And your dreams. Respect your elders. Get a real job. Get married. Spend time with family. Be responsible. Dance to the beat of your own drum. Dress proper. Start a family. Be a good role model. Move to the suburbs. Be humble. Pass down tradition. Listen to advice. You get paid for it? Shut up! Do not hang up on me! Go ahead. Stop shouting. Time to grow up. Of a fast-running engine and the automobile, Gottlieb Daimler and Carl Benz laid the foundation stone for individual motor car traffic. Both brought their own developments into the company, and both were looking for a catchy and unmistakable brand name. And that was how, at the turn of the century, the Daimler Motor Corporation caused furore with a completely new brand name, Mercedes. This Spanish name first belonged to Mercedes Jelinek, the daughter of Austrian business tycoon Emil Jelinek. Her sport-crazed father was especially enthusiastic about the automobile, and he was convinced that it would change the future with lasting effect. Being the best and at times the only major customer of the young Daimler Motorengesellschaft, he demanded faster and more powerful vehicles every other year, presenting continuous challenges for the chief engineer Wilhelm Maybach, and at the same time pushing progress forward. From 1899 on, Jelinek entered his vehicles in races, especially in the Nice Speed Week. The driver and his team were registered under a pseudonym, the name of his 10-year-old daughter, Mercedes. A fatal accident occurred in 1900 at the La Tourbe hill climb, so Jelinek pressed for the production of a vehicle both faster and more lightweight. The newly developed sports and racing car with 35 horsepower was the first one to bear the name Mercedes. With its low center of gravity, pressed steel frame, and high-performance engine, it is regarded today as the first modern automobile. The Mercedes cars used at the Nice Week of 1901 turned out to be unbeatable in all categories. Vehicle and owner became the talk of the time. Paul Maillan, the Secretary General of the French Automobile Club, was deeply impressed by its success. In retrospect, he wrote of the race, "We were entering the era Mercedes." In March and April, the sister models 1216 horsepower and 811 horsepower were released. Jelinek's additional orders stretched the Cannstatt Daimler plant to full potential. On the 23rd of June in 1902, the name Mercedes was entered as a trade name, followed by legal registration on the 26th of September. Emil Jelinek obtained permission to call himself Jelinek Mercedes from then on, commenting, "Probably for the first time, a father bears the name of his daughter." The
आपकी गाड़ी ड्राइव करते हो रोड पे और सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है तो इंजन कट ऑफ हो जाएगा अगर ऑन है। अच्छा, ये ब्लू मोशन इसी में आ ऐसा जाएगा। है, ठीक है। ये फिर आपका ऑटो पार्क असिस्ट है। अभी आपको पार्क करना है तो ये ऑटोमेटिकली पार्क कर लेगा। तो अगर इसमें सेंसर्स भी है, अभी जैसे आप ड्राइव चल रहे हो, पार्क ही नहीं करना है, गाड़ी ड्राइव चल रही है, आगे कुछ ऑब्जेक्ट आता है या कोई लोग आ जाते बीच में तो बीप करता रहेगा। अगर उसको भी ऑफ करना है तो ये ऑफ कर देंगे ना, ठीक है, तो आपको नहीं आएगा बीप। डायरेक्ट फीचर्स को कंट्रोल यहाँ से करना है आपको। इसमें नेविगेशन का चिप लगाना पड़ेगा, चिप आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। 2 USB स्लॉट दिया हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हो, USB कर सकते हो, ठीक है। अभी फीचर्स को अगर आपको कुछ करना है, जैसे हम जा रहे हैं अभी व्हीकल सेटिंग्स में जाना है हमको, तो दबाया आपने, अभी जैसे गाड़ी लॉक रहती है और आपको अनलॉक करना है तो बीप आएगी, जैसे अनलॉक करोगे तो बीप बजाएगा, तो समझ में आएगा कि आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है, तो आपको इजीली लोकेशन मिल जाएगा गाड़ी का। तो ऑन ऑफ करना है तो आपको यहाँ से ये ऑन ऑफ कर ठीक है। अब दूसरे फीचर्स में जाना है आपको, सीट बेल्ट का। जैसे आपने सीट बेल्ट लगाया तो सीट बेल्ट टेंशनर है, प्री टेंशनर, पीछे आपको खींचेगा तो सेफ्टी के लिए, वो अगर ऑन ऑफ करना है वो भी ऑन ऑफ कर सकते हो। अच्छा, उसका भी ऑप्शन है, ठीक है। मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्डिंग करना है, उसमें भी ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से प्रेस करके। तो लोकेटर इल्यूमिनेशन, आपने जैसे लॉक किया तो आपकी हेडलाइट्स और जो साइड्स में जो लाइट्स है वो ऑन हो जाएगी। उसको ऑन नहीं करना है, उसको ऑफ रखना है, तो वो ऑप्शन है, वो भी है। ऑटोमेटिक लॉकिंग फीचर्स दिया हुआ है, ये ऑफ भी किया है हमने। नॉर्मली डीएक्टिव अगर एंट्री लेवल और ये मॉडल से कंपेयर करोगे तो ये पैनोरामिक सनरूफ है इसमें, उसमें सिंगल सनरूफ, फ्रंट भी आएगा, पीछे सनरूफ भी है। उसमें पार्क असिस्ट नहीं रहेगा, जैसे आपको पार्क असिस्ट होता है उसमें खाली कैमरा रहेगा, ठीक है। उसमें आपको ये एलईडी लाइट नहीं रहेगा, वाइजन लाइट नहीं रहेगा, एम्बिएंट लाइट नहीं रहेगा, ये जो फुल फिनिशिंग नहीं रहेगा। मतलब मोस्टली कॉस्मेटिक डिफरेंस रहेगा, सेफ्टी वाइज और इंजन परफॉर्मेंस सेम है। बूट स्पेस आप दिखा दोगे? हाँ, दिखा दो। मतलब जो प्रोजेक्ट है कॉलेज का MBA, हाँ। Without any power to control, all the nature's on a roll and we are gone. All the others must be wrong, but now we can decide, and every muscle must be torn. We're gonna be alright, and we'll always be we inside, inside. We can always be if we choose to stay. Nature can't be forced to The idea was all mine. When we used to talk, our thoughts used to combine. Your melody was soft and unexpected, and endlessly awaited. Any other day in my mind, I would call you up and tell you about the things that I don't understand. How I'm the king of cool and you're an acrobat. Without any power to control, Mother Nature's on a roll and we are gone. All the others must be wrong, but now we can decide, and every muscle must be torn. अपना सेल्स रिलेटेड ही सब आपका स्टार्ट। हाँ, तो अबू जी अभी कस्टमर शोरूम आता है
तो एक इंक्वायरी आने से उसका गाड़ी डिलीवर होने तक क्या प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो, आप बता सकते हो? कस्टमर्स का जैसा इंक्वायरी हमको मिलता है ना, इमीडिएट विद इन मैक्सिमम वी टेक अपॉइंटमेंट, बहुत जरूरी है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका नीड एनालिसिस करना, क्या चाहता है, उसके पास गाड़ी पहुँची है, उसके बाद वो फाइनेंस करेगा नहीं होगा, प्रीवियस पैकेज करेगा, सब अपॉइंटमेंट लेके गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, गाड़ी का फिर उसके बाद और उसका नीड एनालिसिस क्या चाहता है, कौन सी गाड़ी और ये फर्स्ट गाड़ी है या सेकेंड गाड़ी है, अगर सेकेंड गाड़ी है तो कितना यूसेज, पेट्रोल लेगा या डीजल लेगा, मिनिमम कितने किलोमीटर चला है, फैमिली के लिए है या इंडिविजुअली चलेगा या फ्रेंड सर्कल में, और एक गाड़ी में कितना साल यूज करता है, उसके बाद उसके साथ हमारा फाइनेंस का दो स्कीम है। एक होता है नॉर्मल फाइनेंस, उसमें गाड़ी को कस्टमर ले जाता है, एक होता है एलिजिबिलिटी फाइनेंस, जिसका हम लोग कैसे कैपिटल होता है साल में एक बार, इसके अंदर कस्टमर गाड़ी रिटर्न कर सकते हैं, खाली रेंट भर के, क्योंकि उसको ये फैसिलिटी है कि अगर आउटसाइड बैंक का ईएमआई 1,30,000 है, यहाँ 40% है, वो एक परसेंट है कि 40,000 उसका महीने का बचता है, इधर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब फैसिलिटी आप बताते हो तो कन्विंस होना भी ईजी होता है। और मोस्टली अभी जैसे कि एक गाड़ी मान लो आपने सी क्लास दिखा दी कस्टमर को, तो कोई और गाड़ी भी देखता होगा, तो ये ऑब्जेक्शन क्या क्या आते हैं आपको? प्लस बताने के बाद वो कैसा वो एक फ्री देखता है, हाँ, फिर तो उसका हम लोग डायरेक्ट बजट बना सकते हैं। हाँ हाँ, फिर भी कोशिश करते हैं हाँ, कि वो क्या चाहते हैं, डिस्कशन करते हैं और वो अपना फोन कर लेते हैं। मैक्सिमम क्या करते हैं, स्पेशली ब्रांड कैसा है, इट इज़ नॉट आज लाया हुआ, इट इज़ 130 years सर्विस फैसिलिटी, 7 years चल रहा है, एक आपकी सर्विस पे आप कैसा उसको करोगे, जैसा एक रेस्टोरेंट होता है, सेकेंड रेस्टोरेंट होता है, थर्ड, वो हिसाब से तो आप सही से पिच करोगे, उसमें एक बार वर्ड बोला ना नीड है, आप ऊपर करोगे। अबू जी अभी आप काफ़ी टाइम से सेल्स कर रहे हो, तो ये सेल्स का आपका जो एक्सपीरियंस है उसका मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? सबसे अच्छी बात जैसे ऐसे कस्टमर्स को एज ए कस्टमर के साथ ज़्यादा करके उसको एज ए फ्रेंड करना, फ्री करना, जितना हो सकता है फ्री होगा, फ्री होगा। हाँ, और ये शमन आपका मर्सिडीज डीलरशिप में आप जैसे आपने बताया आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, इधर आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ ओके, थैंक यू अबू जी, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन। So we are here with Mr. Ashraf Khan, who is branch head of this beautiful dealership. So sir, I would like to ask you, how do you manage this entire dealership? Managing the entire dealership has been my passion for years, because I have been handling dealership for almost 10-15 years. So there are a lot of teamwork involved in managing a dealership.
and not a difficult task, honestly, if you love your job. Yes, sir. So, actually dealing with premium customers in Mercedes, so there must be a different experience. So, how do you handle different types of customers? See, like I said, already if you are into the business of handling customers for long, the most important thing is, I feel you should come to a level where the customer actually is. I mean, if you are speaking to someone and in Hindi, and if he is answering you in Gujarati, so you might have to learn Gujarati for him. Yes. You have to be at a level with those customers. So that is how it is. I mean, no different. I mean. Yes. So, and sir, sales is the integral part of of your showroom. So, how do you motivate all your sales staff? See, motivation is generally everyday morning meetings are conducted. Whoever is the achiever, we clap for him, and obviously he's been rewarded also as a performer. So motivation level again secondly comes from incentive. If we are paying timely incentives the consultants, and if he is earning handsome, then obviously he is motivated. So that is done every day. Okay. And sir, do you follow any training for your sales staff and other staff who are We working? continuously do in-house training also. We have an in-house trainer who keeps on giving trainings and all that to the entire team. Okay, sir. And you have been part of sales in like a decade now. So I just wanted to know, what is the most important thing about the sales? Important thing is passion. Okay. You should have a passion to sell. Then you can sell almost anything. Okay. So it is basically passion, dedication, and you have to be disciplined. Okay. These are the things which make you going. Sir, and last question now. What exact process do you follow from a customer entering your showroom till the time he goes out with his delivered with his car? The entire process is like welcome, greeting. It starts from there. You give him a warm welcome, you offer something to him, make him comfortable. Then whatever he actually wants to buy, you should sell him that particular product. So you have to do a lot of probing and all that. Then once he is finalized on a product, you should make him feel like he has bought a car which he has already dreamt of. Okay. So you have to give that particular feel to the customer. And honestly, during delivery, we make it a special occasion. If his birthday is there, we cut a cake and all that. Okay. And we may surprise also a few customers, in their family if they want to give a surprise. Okay. So those things are a part of that. Yeah. Thank you, sir. Thanks a lot for your time. Thank you so much. One bought a Mercedes for the first time. One always worried about coming to a dealer. On car forums you would hear the term stealership instead of a dealership, and one would genuinely worry. The experience at Shaman Mercedes now over the last few years has actually been fantastic. I think it helps that for those of us who own modern classics, that both Amar Sheth, who's kind of the founder of Shaman, as well as Tavan Oza, who's the workshop manager here, they're both passionate about classic cars as well, and that has made a huge difference for a whole bunch of us. I mean, now in the last so many years, my car hasn't been anywhere except to Shaman at Churchgate, and I stay in the far-flung western suburbs. It's a 1.5 hour trek each way, but it's absolutely worth it. Their attention to detail, their patience with trying to diagnose the problems with the older cars is quite unbelievable. I would recommend it very strongly to anyone who owns a W124, a W126, the older 190s, and frankly any newer Mercedes as well. It's been a fantastic experience right through. Beep, beep, beep.